कहाँ लिखा है कि यह 2018? आदेश यह आदेश दिनांक 1/7/18 से प्रभावशील माना उससे जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? प्रभावशील माना जाएगा मतलब जो 1/7/18 के बाद सेवानिवृत्त होंगे उनको 300 दिन का लीव एनकैशमेंट मिलना है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ लीव इन देयर लीव अकाउंट। माय लॉर्ड, आप बोले तो हम गिल्डियाल साहब को रिक्वेस्ट करके एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर नहीं, देते मेरी हैं। प्रार्थना साहब ये ये थी, प्रार्थना नहीं है, आपके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कानून समझना नहीं चाहते हैं। जो एंटर हुआ साहब, जो सर्विस बुक में जो एंट्री हुई है ना, इनकी 1/7/18 की है, तो एट द टाइम ऑफ माय नहीं, लॉर्ड ऐसा नहीं होता, यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर। आप लोग कर्मचारी का विरोधी हैं, हमें ये लिखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इज एंटी एम्प्लॉय। सर मैं आपसे 2 मिनट रिक्वेस्ट करूं, गिल्डियाल साहब पढ़िएगा, P2 दीजिएगा पढ़ने के लिए। तो उसमें लिखा है कि 240 के बजाय 300 300 दिन होगा। आप उसको कट कैसे कर देंगे? साहब ये अगर आपके नहीं, मैं आई हैव टू राइट हियर विश्रामा का, मेरी सिर्फ प्रार्थना साहब ये है कि ये विश्रामावकाश जो प्राप्त करते हैं साहब, उनके ऐसा लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले ये था। आपकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या कह रही है? साहब को ये एफिडेविट दे दो 2 मिनट प्लीज, जिससे कहीं कोई, साहब 2 मिनट देख लीजिएगा गिल्डियाल साहब कि कहीं कोई गलती ना हो जाए हमसे भी। इनका एफिडेविट ये कह रहा है आपके पास में कॉपी चतुर्वेदी हाँ, जी? अच्छा ठीक है, फिर मेरे को ही दे दीजिए। मैं आपको सब फैक्ट्स बताता हूँ। ये आदमी 2022 में रिटायर हुआ। अब इनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये कह रही है कि क्योंकि 2018 तक इनके खाते में 240 दिन का था और उसके बाद इनको कभी भी समर वेकेशन में बुलाया नहीं गया, इसके कारण जो है his leave is to be restricted to 240. Now that is an erroneous interpretation, because if the leave in his leave account was to the tune of 373 days as on 2018, then that leave for 73 days will lapse on the day, on the eve of his retirement, and he could have availed that leave. Yes. And he will be entitled to maximum encashment of 300 days. So on that date, if the leave accumulated in his leave account was more than 300 days or 300 days, then he will be entitled to encashment of 300 days leave. बाद में क्या हुआ, वी आर नॉट कंसर्न विद इट। उससे आप उसकी पुरानी लीव थोड़ी कम कर देंगे। हाँ, पुरानी लीव थोड़ा कम कर देंगे। वो जो 373 गलत क्या है, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खाते में डलवा दें? नहीं, इस बार मेरी प्रार्थना सब सी जो कॉस्ट भी बताइएगा कितनी लगेगी, प्रार्थना करने के बाद में कॉस्ट जो बताइएगा। सर्विस बुक में साहब जो एंट्री है ना 373 दिन की, हाँ, दैट इज रॉन्ग हाँ, एंट्री तो मानो। कितनी सही एंट्री क्या है बताइएगा उसके ना। खिलाफ हम नहीं, उसके खिलाफ नहीं, सही एंट्री का गणना कहाँ है बताइएगा इस एफिडेविट के साथ में कि सही एंट्री कितनी है। आप रिटायर्ड आदमी के खिलाफ पहले तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? सिर्फ साहब वो नहीं, सिर्फ नहीं, आपको 1/7/18 की स्थिति में इनका 240 दिन का नहीं, ऐसा नहीं होता है, यही आपको समझा रहे हैं। अब आप बताइए कितनी कॉस्ट लगाएं, 25,000, 50,000 टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल सेक्रेटरी आफ्टर नोटिंग दैट प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैज गिवन अ colored interpretation to the circular of finance department. मतलब एंट्री इज द माइलॉट बिफोर द कॉस्ट कितनी, 25,000 देंगे कि सर 50,000? मेरी सिर्फ प्रार्थना ये थी कि एंट्री ऑफ द सर्विस बुक इन बिफोर द माइलॉट आफ्टर दिस सर्कुलर माइलॉट। क्या मतलब? 2019 का जो सर्कुलर आया उसके पहले की सर्विस बुक में जो एंट्री थी साहब, हाँ, एट दैट टाइम दे आर एंटाइटल्ड फॉर 240 डेज ओनली। ये नहीं होता वकील बस साहब। वही मेरी प्रार्थना। जाइएगा इसको, सर्कुलर हाँ, रिट अपील में जाएंगे, चैलेंज करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे डायरेक्ट। मतलब एनेक्चर P5 में ये 15/2/21 की एंट्री है। P5 कब लगाया आपने? ये इन्हें पिटीशन के साथ ही P4 तक लगाया भैया। P5 है। P5 हमारे पास लगा ही नहीं है। ललिता प्रसाद है ना ये, ललिता प्रसाद द्विवेदी, कहाँ लगा है P5? देखो भाई आपके उसमें लगा है क्या P5? तो P4 तक लगा है। देखिएगा, देयर इज अ मिसमैच इन द स्कैन्ड कॉपी एंड द फिजिकल कॉपी in next para, in WP 25254/23, in the physical copy petitioner has shown annexure P5 in the index as copy of relevant page of service book, full stop. In the scanned copy, annexures only up to P4 have been shown, though P5 is available on page 21, but it has not been shown in the scanned index. There is an ambiguity in the scanned copy and the physical copy. Full stop. It is a serious matter. Such ambiguities can result in miscarriage of justice. Full stop. है आपके कंप्यूटर पे P5 है क्या? देखिएगा ना। P4 के साथ ही जुड़ा है। अरे जुड़ा है यहाँ पर तो इंडेक्स हाँ, अलग से नहीं है सब। लेट
action be taken against the delinquent under intimation to the court within 7 days that how a scanned copy is different from the physical copy available on record. Next para. Petitioner's case in short is that petitioner attained age of superannuation on 30/4/2022, full stop. In his leave account, there were 358 days of leave available, full stop. Shall be entitled to leave encashment to the extent of 300 days, full stop. In the present case, next para, in the present case, reply was filed by the government advocate. क्या गवर्नमेंट एडवोकेट पढ़ते लिखते नहीं है आपके यहाँ? क्या उनको पढ़ने से मनाही है? Duly supported with an affidavit of one Shri G.P. Upadhyay, District Education Officer, Rewa. Full stop. Next para. In the reply so filed by the state, a prayer is made for dismissal of the writ petition on the ground that since no fresh leave was credited to the leave account of the petitioner after 1/7/2018, therefore he will be entitled to leave encashment to the extent of 240 days only. Full stop. Next para. Finding the reply to be absurd inasmuch as it was admitted by the answering respondents in para 6 of their reply that till 15/5/2017 there were as many as 373 days earned leave outstanding in the leave account of the petitioner, comma, this court had requested the Principal Secretary, School Education Department to file his/her affidavit. Next para. In compliance of the orders of this court dated 12/1/24, Srimati Rashmi Arun Shami, wife of Shri Sanjeev Shami, presently working as Principal Secretary, School Education Department, has filed her personal affidavit. Full stop. After mentioning about after admitting in para 2 of the said affidavit filed wide IA number 1348/2024, comma, that petitioner attained age of superannuation from the post of higher division teacher on 30/4/2022. It is mentioned that as per Finance Department circular dated 8/3/2019, the limit for accumulation of earned leave has been increased to 300 days instead of 240 days after 1/7/2018. Full stop. Thereafter, it is mentioned that the limit for accumulation of earned leave before 1/7/2018 was limited to 240 days. And thereafter, it is submitted that since no fresh earned leave was credited to the account of the petitioner after 1/7/2018, he will be entitled to leave encashment to the extent of 240 days, which is factually incorrect and reflects poor understanding of legal provisions by even the Principal Secretary of the School Education Department. Next para. At this stage, this court requested Shri K.C. Gildyal, learned senior advocate, assisted by Shri Aditya Veer Singh, to assist this court as an amicus
Next pair. Shri K.C. Gildyal is of the opinion that on account of existence of 373 days of earned leave available in the leave account of the petitioner, comma, he will be entitled to leave encashment of 300 days of leave, which is the higher ceiling for leave encashment, and accumulation could not have been pegged at 240 days, and the interpretation given by the principal secretary is erroneous. Full stop. Next pair. Therefore, at this stage, Shri Manas Mani Verma submits that interpretation given by the principal secretary is correct, and since no new leave, earned leave was credited to the account of the petitioner after 1/7/2018, 15, 2003. his maximum limit for leave encashment will be 240 days only. Next para. Once a provision has been made applicable and Rule 25 of the leave rules has been amended, then benefit of that amendment cannot be taken away by the respondents by giving erroneous interpretation to the leave rules or the finance department circular. Full stop. It is true that any leave on the eve of retirement above the ceiling of 300 days would stand lapsed. Full stop. Similarly, if the leave accumulated would have been less than 300 days on the eve of retirement, then petitioner would have been entitled to leave encashment to that extent of accumulated leave, notwithstanding the higher ceiling of 300 days. Full stop. Next para. Thus, when examined from this perspective, and also the provisions of amended Rule 25 are taken into consideration, then it is evident that the Principal Secretary has failed to take a judicious view of the matter and has tried to mislead the court by giving her own interpretation, not supported with any documentary or other evidence. Thus, petition deserves to be allowed and is hereby allowed. Respondents are directed to pay leave encashment of 300 days in favor of the petitioner within 30 days, along with 9% interest from the date of his superannuation, that is 1 May 2022 till the date of actual payment. रिमेनिंग 60 डेज बचा है साहब 240 का हाँ मिल तो उसी जितने भी है, ठीक है ना, this difference of 9% on the difference of leave encashment, that is 60 days. Respondents will also bear cost of this litigation, which is quantified at rupees 10,000.